today we have a new problem which name is Contiguous Array Leetcode 525 problem. So let's see the problem statement. So we have given a binary array nums. We have to return the maximum length of contiguous subarray with an equal length of zeros and ones. Means the sum of the subarray will be like if we consider 0 as minus 1, then sum of the subarray will be minus 0. So let's take an example. If my nums array is 0 comma 1, so as you can see 0 is presenting one time and 1 is presenting one time. So the sum 0 comma 1 is the longest contiguous subarray with an equal number of zeros and 1. So the length of this subarray will be 2. So let's take another example 0 1 0. So here can be two subarrays like 0 1. If we take 0 1, 0 is occurring only one time and 1 also occurring only one time. So 0 1 can be a subarray or 1 0 can be a subarray. So the longest contiguous subarray will be 2. Length will be 2. So we will return 2. So now let's see the approach for this. Yeah. So as you can see here, if we have this example like 101. This is my array. So the subarray can be 10 because 1 is occurring only one time and 0 is occurring only one time. So the number of occurrence of 1 and 0 are same. So that's why the length of this is 2 and 01 can be a subarray also. So if we take an example 111 00 then 11. So this can be a subarray 1100 because 1 is occurring here, 1 is occurring only two times and 0 is occurring also two times. So the occurrence are same. That's why we will return the length, contiguous subarray length like 1100. The length is 4, so we will return 4, and also this can be a subarray. So let's take this example like we will see this after some time. If we take a approach like if we consider 0 as minus 1, then the subarray, the sum of the subarray should be 0. Like if we take an example, this the subarray is 1100. If we consider 0 as minus 1, then the subarray will be 00 minus 0011. Initially, if we consider 0 as minus 1, then subarray will be minus 1 minus 1 1 1, and the sum of the whole subarray is 0. So that can be my approach also. So let's see this approach. So for that approach, I have to find the sum of the subarray. Like if this is my array 1 1 1 0 0 1 1. So I will create a, this is not a array. This is a just a variable sum. So initially sum equals to 0. Now I will add up 0 plus 1 1, then 2, then 3. यहाँ तक 3 हो गया, ठीक है. If we consider 0 as minus 1, then 3 minus 1 will be 2, and this again 2 minus 1 will be 1, then this 1, then 1 plus 1 2, then 2 plus 1 3. So this is the flow of the flow of my sum variable. 1 2 then 3 then 2 1 then 2 3. So as you can see here, 2 is here and also 2 is here, means we have seen 2 as previous, like 2 is coming here and 2 is also coming here. So in between जो भी एलिमेंट है मतलब वो एक जीरो क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे, ठीक है. यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल 110, सॉरी या 2 जहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसके बीच में जितने भी है लाइक 10 दिस वन, ये वाला ये लेंगे तो 10 इक्वल बना रहे हैं, ठीक है. तो ये हो सकता है, ठीक है. देन वी हैव सीन दिस वन एज प्रीवियस हेयर एंड ऑल्सो दिस वन इज कमिंग हेयर ऑल्सो. सो इन बिटवीन जितने भी एलिमेंट है लाइक 1 1 0 0, दिस कैन बी माई सब एरे 1 1 0 0, एंड ऑल्सो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स है लाइक 1 0 0 1 1 0 0 1. सो ये वाला एक सब एरे हो सकता है. देन 3 का भी हो सकता है, इसका 0 0 1 1 का भी एक सब एरे हो सकता है, ठीक है. सो नाउ लेट्स टेक द लेट्स सी द अप्रोच फॉर दिस. If we have this nums array, so what we will do, we have to find the sum flow of the sum. So that's why we are creating a variable sum, and we have to find the longest subarrays. That's why we are creating a variable longest subarray, and we will use a map as key value approach. So key is my sum.
whatever sum we will get, that will be a key, and value is my index of that nums array. So what I will do is I will traverse the whole array, and I'll see like if at a zeroth index 1 is coming, so 1 is coming, so now my sum will be 1, and at corresponding 1 is my key. Here, as you can see here, the in map key is my sum, so 1 is my key, so 1 is my key, and कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, जीरो इंडेक्स पे आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यू जो है, वैल्यू क्या इंडेक्स है, सो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है, और लॉन्गेस्ट सवेरे इनिशियली जीरो है, ठीक है। नाउ अगेन आगे ट्रेवर्स किया, बनाया यहाँ पे, तो सम कितना हुआ, टू हो गया, टू हो गया, तो टू माई सम हो गया, तो ये मेरा टू की बन गया, और कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग हो गया, और लॉन्गेस्ट सवेरे कितना हो गया मेरा, अभी तक तो वही है, लॉन्गेस्ट सवेरे जीरो ही चल रहा है, ठीक है। देन अगेन जीरो पे आया, तो सॉरी, हाँ, जीरो पे आया, तो जीरो को मेरे को -1 कंसीडर करना है, तो इफ बी कंसीडर जीरो एज -1, देन अवर सम विल बी 2 -1, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, जीरो। अब अपडेट होगी वैल्यू, ठीक है, अपडेट कैसे होगी, लेंथ ऑफ माई सब एरे इक्वल टू करंट इंडेक्स माइनस मैप इंडेक्स, एज यू कैन सी हियर 1 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, नाउ 1 इज ऑल्सो कमिंग, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेक लाइक लेंथ ऑफ सब एरे क्या होता है, करंट इंडेक्स 1 का कितना है, यहाँ पर देख सकते हो, 1 का करंट इंडेक्स है 2, यहाँ पे यहाँ से ही तो आया, तो 2 माइनस इस वाले का इंडेक्स, मैप वाले का इंडेक्स, मैप ऑफ दैट इंडेक्स, so 2 minus 0 equals to 2, so I will update the longest alpha array values to 2, ये 2 हो गया, ठीक है। नाउ अगेन मैं आगे जाऊंगा, आगे गया 3 पर गया, थर्ड इंडेक्स पर, सो 2 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा, अगेन मैं चेक करूंगा, इनिशियली जीरो था, ठीक है, और फाइनली भी मैं जीरो मेरे पास आ रहा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि इसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, 3 है, बट इस केस में क्या है कि मैं इनिशियली जीरो से स्टार्ट किया, फाइनली में जीरो मिला, ठीक है, तो वॉट एवर एलिमेंट्स मीन जितने भी एलिमेंट्स उसके बीच में, इन बिटवीन ऑफ देम, जीरो के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे सब एरे क्रिएट करेंगे, इट मीन्स क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया और फाइनली मैं जीरो मेरे को मिल रहा है, इट मीन्स द सम ऑफ द सब एरे इज जीरो, so whatever elements are there in between of there, that will be my sub array, so 4 minus 0, 4 minus 0 is my sub array, it is not like current index minus map index, it is like कि कितने एलिमेंट्स हमारे बीच में आ रहे हैं, ठीक है, सो 4 माइनस 0 इज माई आंसर। देन आगे बढ़ूंगा, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कितना है, 0, बट यहाँ पर मेरे कौन से इंडेक्स पे मिल रहा है मेरे को, 1 फोर्थ पे मिल रहा है, तो 4 माइनस 0 जो कि 4 हो गया, तो लॉन्गेस्ट सवेरे नाउ कितना हो गया मेरा, 4, ऐसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है, फाइनली मैं क्या गेट करूंगा, मेरे को फाइनली लॉन्गेस्ट सवेरे मिल जाएगा 6, दैट विल बी माई आंसर, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट टेक्निक, लेंथ ऑफ द सवेरे इज करंट इंडेक्स माइनस मैप ऑफ दैट इंडेक्स, index of that map, so that is my approach, so let's see the code, by using the code we will see the approach also. So for the coding part, what I will do, I have to create a map, so let's create the map, an order map of integer comma integer, that is MP. Now I have to create a variable sum to keep track of that sum of those elements, so initially it will be 0, and also sub array लेंथ इक्वल टू जीरो, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाद में लिखने में दिक्कत नहीं होगी, इनिशियली ये तो लेंथ जीरो है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रेवर्स द होल एरे, so for int I equals to 0 to I less than n, then I plus plus, now I will traverse and I will check if nums of I, like मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, ऐसे ही लिख देता है, सम प्लस इक्वल टू nums of I इक्वल टू सॉरी नम्स ऑफ आई, अगर नम्स ऑफ आई जीरो है तो मैं -1 की तरह कंसीडर करूंगा, अगर नम्स ऑफ आई 1 है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, सो इक्वल टू जीरो, देन इन दैट केस व्हाट आई विल डू,
-1 की तरह कंसीडर करूंगा, अदरवाइज 1 की तरह कंसीडर करूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल चेक इफ सम इक्वल टू 0, लाइक दिस इज द केस। इफ मैं इनिशियली सम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और फाइनली मेरे को 0 मिल गया, इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं क्या करूंगा, जो कि इंडेक्स पे हूँ मैं i+1 कर दूंगा, लाइक मैं यहाँ पे था, एक यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ इस इंडेक्स पर, थर्ड इंडेक्स पर आकर मेरा 0 हो गया, तो इस केस में मैंने क्या किया, i+1 किया, इंडेक्स +1 कर दिया, दैट विल मेक 4, दैट विल अ 4। सो सेम केस यहाँ पे करूंगा कि इस केस में एक कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, इफ सब एरे लेंथ इज लेस देन i+1, तभी तो अपडेट करूंगा। अगर मेरी लेंथ ही i+1 से ज़्यादा है तो अपडेट करने का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लेंथ वाला है, दैट्स वाई सब एरे लेंथ इज इक्वल टू i+1 इस केस में। सेकंड कंडीशन इज एल्स इफ कंडीशन, इफ मैप डॉट फाइंड ऑफ सम is not equal to map dot end, if that sum is present in the map, if that sum is present in the map, then in that condition what I will do, उसको मैं क्या करूँगा, लेंथ ऑफ सब इक्वल टू करंट इंडेक्स माइनस मैप इंडेक्स। सो इस केस में एक इफ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। सो सब एरे लेंथ इज लेस देन आई माइनस मैप मैप ऑफ सम, दैट मैप ऑफ करेस्पॉन्डिंग सम। सो इस केस में मेरे को equals to I minus map of sum, and in else condition what I will do, map of that corresponding sum equals to I. So these three are my conditions, and finally what I will do, I will return longest subarray length. So this will be a code. Let's run this and see if this will work or not. It is giving me some error. Sorry. Yeah. I equals to 0, I less than nums dot size. Again run this. Else if map dot find is not equal to map dot end, इसमें क्या दिक्कत है? If map dot find is not equal to map dot end, so I have changed this to max length, so that's why, because there are many conditions, and some conditions are not getting correct, so that's why I have changed this to max length, and directly finding the maximum of that length. So max length equals to maximum of max length comma I minus map of that sum, so that will be a correct. So now again let's run this. So approach is same, and simply I have done this max length technique. So now let's submit this also. Yeah, as you can see here, it is working perfect. So now let's discuss about time and space complexity for the solution. So as you can see here, we are traversing the whole array. So the time complexity will be big of n, and the space complexity is somehow big of n, because as you can see, we are using the unordered map, but we are somehow storing the elements in map. So the space complexity is big of n also. So that will be that is a complete solution for this. If you find this helpful, then please like, share, and subscribe. Bye.